right? So in beam, one thing you always remember that load is always in a transverse direction, and based on this transverse direction conditions हम कुछ terms को define करेंगे. That term is like shear force and bending, right? So here we are more concerned about the diagram of this bending moment as well as your shear force diagram. But the अंडरस्टैंडिंग के पार्ट को अगर हम समझने की कोशिश करें तो why this study is important. So the first point that I'm going to write, that why to study shear force and bending moment diagram here, the first is like finding the shear force and bending moment is an essential step in the design of any beam, right? अब डिजाइन के रिस्पेक्ट में आप क्या जानने की कोशिश करते हो? तो once we know the value of, you can say, shear force and bending moment diagram, we can define at any stage of the beam, you can say at any stage we can find the stress, we can find the strain, and we can also find the deflection of the beam conditions, right? So if we know all these parameters कि किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें स्ट्रेस क्या है, उसमें स्ट्रेन क्या है, या उसमें डिफ्लेक्शन क्या है, so analysis or understanding of all these parameters tell you about the design of the beam conditions, right? So shear force and bending moment, one thing is always remember, is an essential tool to design any of the beam conditions, right? So we have different steps, like we have steps to follow to define shear force and bending moment, right? So if I'm going to write to draw shear force and bending moment, to draw shear force and bending moment, we need 3 steps to follow, right? मतलब अगर हमको shear force और bending moment चाहिए तो हमें 3 steps को follow करना पड़ेगा. The step 1 means what? You need to first find out with the help of engineering mechanics, for finding reactions, right? So we'll see what is reaction. Accordingly, we'll define this term. Step 2. Once we know the value of reaction, we can define shear force diagram and bending moment diagram equations, right? And third step, using graph theory, we can say that using graph theory to draw diagram, right? So class, always remember कि there three, first आपका first step कोई भी question में आएगा है, and if they ask you about bending moment and shear force diagram, then first thing you need to calculate is the reactions, right? So for finding reaction हमको first ये पता होना चाहिए कि what are the supports it is to be there, ठीक है? तो supports, जिस type का supports होगा उसी के basis पे आपके reactions apply हो, right? Okay. So let's first understand what are the supports. So let's write types of support.
when we say types of support, the first support that we are going to study is your fixed support, which is also known as built-in, or it is also defined as guided support, right? So let's understand what is fixed support. Suppose a cantilever beam, suppose karo, which is known as a cantilever beam, is fixed at one end and it is free at the other end. So we apply a load at the free end, right? So अब यहाँ पे support अगर आप देख रहे हो तो this wall is giving support to this beam. Okay. Now अब आप इस support में देखोगे, so this support क्या करेगा, इस beam को deflect होने से बचाएगा at this end पे, right? So it means what? At this particular position पे आपका एक vertical reaction है जो इसको होल्ड कर रहा है, जिसको हमने ry बोला. एक आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है Rx, जिसको हमने बोला. मतलब क्या है कि ये बीम x डायरेक्शन पे ट्रांसलेशन नहीं करेगा, y डायरेक्शन पे ट्रांसलेशन नहीं करेगा बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट. एंड अलोंग विद दैट दिस बीम also give a moment at this point, right? So based on this criteria, if anybody is given कि हाँ यहाँ पे एक fixed support है, तो you need to find out the reactions. तो reactions कौन कौन सी होंगी? आपकी vertical reactions होंगी, आपकी horizontal reactions होगी, और यहाँ पे होगी moment, right? This type of support is defined as your fixed support. Now the second one, when we're talking about the second one, it is also defined as pin joint, which is also defined as hinged support, right? So the first thing that I'm going to draw is like this representation. So its representation is something like this, right? Suppose if you apply a load on this particular position, right, you can see that the hinge support gives you a vertical support to this load beam. So we can say that this is a reaction Y. If it is of A point, if it is of B point, then it is defined as reaction at A and reaction at B conditions, right? Along with that, this hinge support cannot translate in horizontal direction, right? So we can also say that at point A, this hinge support gives vertical reactions, horizontal reaction, but it does not give any movement at point A. So no movement at point A is defined in pin joint, or you can say hinged joint, right? Just we have seen in the previous condition, like fixed have movement, but pin joint or hinge support does not have any movement. It only have reactions in the x directions and in y directions, right? Like the third support that we are going to study is your roller support, right? So just like its names appear, roller support means it rolls. So when we are talking about the roller supports, it having representation something like this, and it is also representation like this also, right? So here in this condition, suppose a load of P is acting at this position, then it is only having reactions vertical directions. So we can say that reactions at A point, and there is no horizontal. So in roller support, the point which is worth remember is no horizontal
and no moment, right? So when we, in the previous conditions, when we are going to find the shear force and bending moment diagram, we need three steps to follow, right? The first step is to find out the reactions, right? With the help of engineering mechanics. When I say engineering mechanics means it is defined as equilibrium of forces or equilibrium of moment. So based on these two conditions, we can find the reactions at the end points, right? Okay. So let's first understand these are the reactions. You can say these are the supports which we need to find out, right? Next, that what are the types of beam? The beam कितने types की होती है? So can anyone tell me कि beam को classify करने के लिए आपका criteria क्या है? How we are going to classify the beam? Can anyone explain me how you are going to classify, like what type of beam it is, based on which criteria it is defined that this type of beam is there? Can anyone? Shreyas? For according to supports, Exactly. we So classify. according, Piyush, very nice. According to supports की conditions को अगर हम जाने, तो let's understand कि what are the supports it is to be there, right? So first thing with respect to beam conditions को अगर हम जानने की कोशिश करें, right? So here what we are going to study, beam, right? When we say beam, so the first things comes in your mind, it is your transversely loaded member, right? Beam does not have axially loading conditions. It always have transversely loaded member, right? So based on this condition, we have defined first, which is defined as cantilever beam, right? Now, what is cantilever beam? When I say a cantilever beam, then cantilever beam is defined as a beam which is fixed at one end. So the cantilever beam is fixed at one end and other end is free, right? So it does not have any supports on the other end. So based on this, in this cantilever beam, हमारे पास different types of loading defined, right? So जैसे हमने beam को classify किया with respect to support, अब हम load को classify कर रहे हैं कि what type of load it is to be there, right? तो अगर हम यहाँ पे load को define करते हैं, तो first load that we are going to see is your point load, right? पॉइंट लोड का मतलब क्या हुआ कि वो लोड जो सिर्फ एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करे, द होल ऑफ इज वेट इज पॉइंट इज directing toward one point, right? Then we have, you can say UVL. UVL. UVL defined for uniformly varying load, right? So it means what कि ये जो है that इसका जो नेचर है, जो लोडिंग कंडीशन है वो आपकी इंक्रीज करती हुई जाएगी या डिक्रीज करती हुई जाएगी, राइट? थर्ड वी हैव डिफाइंड इज UDL. UDL मींस व्हाट? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, राइट? तो जब हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात कर रहे हैं तो इट इज टू बी डिफाइंड इन समथिंग लाइक कि W किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब it is uniformly distributed everywhere. Every meter पे जो weight distribution है that is of W, right? अब देखो, when I say you have already defined point load, so this is you can say a point load it is to be defined of weight W. Similarly, when I say UDL, तो चलो we are going to define UDL. So representation of UDL is something like this: uniformly distributed load. It is defined as UDL, right? Now
Suppose I'm going to say UVL, uniformly varying load. So we have defined in this particular fashion, right? So this is something like at every stage you can say the value of weight is going to increase. So at one cantilever beam, you can see different types of loading, right? So the first thing you need to remember is cantilever beam. What is cantilever beam? Cantilever beam is fixed at one end and is free at other end, right? अब based on this कि उसमें loading कौन सा लगा है, तो यहाँ पे point load भी हो सकता है, UVL भी हो सकता है और UDL भी हो सकता है, ठीक है? So every load के लिए conditions हमारी change होती जाएगी. Moving to the next point now. The next beam condition that we are going to study, which is also very common, which is defined as simply supported. Simply supported beam, right? So in simply supported beam, we have many type of combinations of the supports. The first thing that we are going to see is like, suppose we have a hinge support at both ends. In simply supported, we can see the hinge, it has both ends, right? So here in this case, it is defined as a different type की loadings हो सकती है, the movement is also to be act in this direction, right? So we can say if it is of A point, this is of B point, तो हमने क्या देखा कि hinge है तो R A and R B reactions, right? अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट हमेशा याद रखना, यू कैन सी दैट इन दिस कंडीशन all loading acting vertically downward directions, all loading, whether it's of point load or UDL or this moment. So it means what कि अगर यहाँ पे रिएक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस को आप देखने की कोशिश करो, राइट? So we do not have any reaction. जो लोड की वजह से जो रिएक्शन डेवलप होना है along horizontal direction में वो नहीं है, right? So we cannot consider horizontal reaction in this case. जब भी इस टाइप की कंडीशन आई, आपको पता है कि अगर सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शंस पे आपको लोड लग रहा है तो आपका सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन ही कंसीडर करेंगे, हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस को कंसीडर नहीं करेंगे, राइट? So here in this case we have defined hinged at both, right? Now the second you can say the B. Here in simply supported conditions को हम define करें. So at one end it is defined as your hinge and the other end it is defined as your roller. And this is the commonly you can say the type of loading you always see in this question, right? So here we have defined hinged and here we have defined roller, right? The third type, like the third combination you can say at both the end you can see roller supports are. So basically सिंपली सपोर्ट बीम वो बीम है जहां पे बीम पे एंड में आपके सपोर्ट्स हैं, राइट? सो वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस कि भाई अगर आपका हिंज है तो दोनों तरफ हिंज हुआ, अगर आपका हिंज एंड सपोर्ट है तो वन एंड हिंज अदर एंड रोलर, इफ आप रोलर है तो दोनों एंड ही रोलर कंडीशन को डिफाइन, राइट? द थर्ड टाइप दैट वी आर गोइंग टू सी इज योर फिक्स्ड, right? So in cantilever beam we can see that one end is fixed. In fixed type of beam it is defined as both end is fixed, right? Both end is fixed, right?
overhanging beam, right? So let's define, it is defined as overhanging beam, right? So in overhanging beam, there is further classification is like, in overhanging beam, it is defined as a single overhanging beam and double overhanging, right? So what does the meaning of single overhanging means? Single overhanging means is support, one extreme end support is there, and other is in between the two, in between the extremes of this one. So this is what single hand, you can say, overhanging beam conditions. When I say it is a double overhanging beam condition, it means that we have two ends which are free. So this is defined as your double overhanging beam, right? There is a one more you can say, this one you can say the fifth one, and the sixth one we have defined, it is your continuous beam. Continuous beam. So what does the meaning of continuous beam? Continuous beam means more than two supports. Continuous beam means more than two supports. So I'm going to draw here. So suppose this is the support at one point, this is the support at other point, and the third support is here in between the two. So this type of loading is defined as your continuous beam, right? So this is the things that we have studied. This is the type of beam. Once we know the type of beam, after that we are going to find the reactions, right? So let's understand how we are going to find the reaction in different beam conditions. So the first step that we are going to here write, based on engineering mechanics conditions, right? तो engineering mechanics conditions के basis पे हम यहाँ पे reactions को find out करें. तो चलो, the first thing that we are going to write here is cantilever beam. Cantilever beam. Okay. Cantilever beam. Let's first draw this cantilever beam. Right. There is a load P which is of, you can say, 10 kilo Newton. What type of load it is there? It is a point load which is acting at the free end, completely free end. The length of this beam is, you can say, 5 meter, right? Okay. Now tell me one thing. ये आपकी condition हो गई. You need to first identify कि what are the reactions developed at a fixed point, right? Now this is a point cantilever beam. You know that in cantilever beam there are three type of reactions will develop. Suppose this is end A, this one is end B. So we can say that there is a horizontal reaction which is defined as HA. There is a vertical reaction which is defined as RA, and there is a moment, right? So you can see that इस point की वजह से जो इसमें movement create होगा या जो आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा, राइट? तो इसको काउंटर करने के लिए आपका इस पॉइंट पे इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शंस नहीं, तो हमने बोला इट इज अ मूवमेंट, राइट? सो बेस्ड, अब ऑलवेज रिमेंबर हमको क्या कैलकुलेट करना है, रिएक्शंस को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस लोड कंडीशन, राइट? कंसीडरिंग द वेट ऑफ द बीम इज 0. We are not considering the weight of the beam, right? Now we are going to define some assumptions. The assumptions is like,
In anti-clockwise direction जो movement होगा, that is to be positive, and clockwise movement it is defined as negative. We are considering anti-clockwise, or you can say counterclockwise, a positive direction, and clockwise is a negative direction, right? So based on equilibrium, of forces and equilibrium of moment equation, we can define कि भाई summation of forces in x direction should be 0. तो जितनी भी x direction पे forces रहेगी वो हम 0 consider करें. Now tell me one thing. In this particular direction, this point load is acting vertically downward directions, and there is no reaction, or you can say the forces at horizontal direction. So we can say that the reaction force at a horizontal direction should be 0, right? Now similarly, we can also that the summation of forces in y direction should be 0. Just tell me one thing. What are the forces in y direction, or you can say the vertical direction? हाँ, एक पॉइंट लोड है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और एक रिएक्शन है जो ए एंड पे है लेकिन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है. तो कैन आई से दैट रिएक्शन एट ए माइनस of 10 is equals to 0 based on equilibrium forces condition? Yes. It means what? The reaction at a point is also 10 kilo Newton. Right? Now I'm going to define what is the moment at point A, right? So equilibrium of moment says the summation of moment at end points, you can say, is 0, right? So just tell me what are the moment at A. So here you can say this is anti-clockwise direction, so we are considering positive. तो moment क्या है? MA, right? और इस point की वजह से इस length of this one, this is also creating one moment, right? ये moment है कितना? P cross L, यानी कि ये moment create हो रहा है which is of clockwise direction. So can we write minus 10 cross 5, and there is, other than that, there is no movement in this, so this value is 0, right? So we can say that the moment at A is 50 kilo Newton meter. So with the help of this condition, in cantilever beam we have defined कि भाई आपका reactions कितना है, आपका movement ma की value कितनी हो गई, horizontal reactions कितना हो गया, या vertical reactions, right? Okay, now let's find out in the second case. The second case is defined as simply supported beam conditions, right? So let's draw. So we have defined this. Suppose we have a hinge support is there, right? And there is a load. अब यहाँ पे loading थोड़ा सा समझना important ये है कि if this load is acting in the center of this one, center of the beam, we can say that okay चलो A total A8 separations है और total L length defined होता है. तो अब यहाँ पे reactions कितना होगा, ठीक है? So we can say that this is capital A, this is capital B. So this is defined as reaction at A point and reaction at B point, right? So how am I going to solve this question? So as per this equilibrium of forces की conditions को देखा जाए तो अब यहाँ पे always remember one thing कि there is no forces in x direction. So we are not considering forces in x directions. We always consider forces in y direction,
that the summation of all the forces in y direction should be 0. That is defined as the equilibrium of forces conditions, right? So we can write that reaction of Ra plus reaction of Rb, because both are in the upward direction, minus P is equals to 0. So based on this, we have defined one equation which is defined as Ra plus Rb is equals to P. This is our first equation, right? Okay. Now the second equation we are going to define कि चलो moment, summation of moment at A point should be 0. A end पे there is no, मतलब the equilibrium of moment is defined. So when I say the equilibrium moment, तो इस point के respect में अब RB कितना moment provide करेगा? अब देखो RB is given as what anti clockwise direction, तो यहाँ पे आपको एक anti clockwise direction मिलेगा. P is defined as clockwise direction. So both movement are in opposite direction. So we can define as RB into, अब ये देखो, can we say that it is 2A? Yes. RB into 2A is the moment, right? Minus P into A is the moment at point, because of point low, and this there is no other moment apart from these two. So this is equal to 0. So can we write कि RB is equals to B by 2, right? When reaction at B point is B by 2, you can define this is the second equation. You put this equation to in equation number 1. तो आपने क्या देखा कि Ra plus Rb is equals to P है. And if the value of Rb is P by 2, the reaction is automatically comes is P by 2. So we can say that the reaction at A point is also P by 2. So based on these two criteria, we can define the reaction at A and B point. तो जैसा कि हमने पहले ही स्टेप में आपको बताया था कि अगर आप shear force and bending moment diagram पढ़ रहे हैं, तो before to understand what is shear force and what is bending moment diagram, you need to first understand कि what is reaction, what are the types of supports it is to be defined, and based on these criteria आप आगे के reaction या conditions को define कर पाओ, right? So this is a simply supported beam when a point load, ये एक case define होता है. In simply supported beam, we can say that if a point load is acting on the midpoint, in a simply supported beam, a point load is acting at the midpoint of a beam, तो जो reactions होंगे वो half of the point load को define करेगा, that is P by 2 or P by 2. Now moving to the next, right? There is a special case of simply supported beam. In this condition, we can say that again this case is defined as we have defined as a simply supported beam with point load, right? Now here in this case the point load is not at the center of the beam. अब अगर center of the beam नहीं है तो क्या conditions निकल के आएगी, that we have to see. ठीक है, चलो हमने बोला ये P है, this point is A from this to this, and this point is B from this to this. So this is your reaction A, this is your reaction B, right? अब just simple case है, you always start with the take moment first rather than कि summation of forces करने के बजाय आप summation of moment को ले लो. So you can say take moment at A point, right? So we can say that the summation of moment at A is equals to 0, right? Now tell me one thing. If I do this, आपका reaction of B into यहाँ से यहाँ तक ये total distance जो है वो हमने बोला कि चलो L, right? तो reaction of B into L ये आपका anti clockwise minus P into A is equals to 0, right? तो देखो जैसे ही मोमेंट ऑफ ए हमने डिफाइन किया आपको रिएक्शंस ऑफ बी मिल गया जिसका वैल्यूज क्या है पी ए बाई, राइट? ओके, सिमिलरली टेक मोमेंट एट बी कंडीशंस इज 0 कर लो, तो अभी क्या हो जाएगा कि एट दिस पॉइंट
बी पॉइंट पे ये आपका क्या डिफाइन करें, क्लॉकवाइज और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो हम डिफाइन कर सकते हैं ना कि चलो माइनस ऑफ आर ए इंटू एल प्लस बी इंटू बी इज इक्वल्स टू 0. इट मीन्स व्हाट, रिएक्शन ए की वैल्यू क्या है, P इंटू बी बाय एल, राइट. तो अब हमेशा एक चीज याद रख लेना, आपको बैठ के अभी जब आगे क्वेश्चन करने के लिए आएगा ना गेट में, तो इन गेट nobody asks you to find the reactions at A and B points, right? They always ask you what is shear force, what is bending moment. Based on this criteria, you calculate this and this, right? So in this type of condition, always remember, right? कि अगर आपको reactions of B पूछ रहा है, B, right? तो अभी जब हाफ था आपका, तो यहाँ पे हाफ ऑफ वैल्यू डिवाइड हो रही थी, तो हम यहाँ पे लिख रहे थे P/2, राइट. अब आपका हाफ तो है नहीं, तो हमने क्या डिफाइन किया, कि ये P इंटू ए, मतलब इसके रिएक्शन का उल्टा इंटू A/L करेंगे, और यहाँ पे करेंगे तो P इंटू उल्टा डिस्टेंस B/L. तो आपने देखा, वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन. तो एक छोटा सा सिंपल सा जुगाड़ टाइप है जो आप डिफाइन कर सकते हो with respect to that. Is that clear to everyone? So based on this, let's do one question. We need to find out, this is of 1 meter, this is of 2 meter, this is of reaction A, this one is reaction of B, this point load is 10 kilonewton, and this one is your 30 kilonewton, right? 2 meter, 1 meter, and total distance is of 5 meter. Find the value of RA and RB. Find the reactions at RA and RB. So here in this case, with how you are going to find this question, you can see that, take a moment, you can say moment at A is 0, right? So here आपकी values क्या हो जाएगी, RB into 5 is equals to, right? Because the anti-clockwise by clockwise, this value is 10 into 1 plus 30 into, आपको यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, तो इसका मतलब ये 1 है, ये 2 3 है, तो इनके बीच का डिस्टेंस होगा 2, 2 + 1 3, राइट. तो आरबी की वैल्यूज क्या हो गई, 90 10 100, 100 by 5 दैट इज योर 20, राइट. अब सेकेंड केस को अगर आप चाहो तो आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई आर ए प्लस आर बी की वर्टिकल फोर्सेस कितना है, 40, एक का 20 है, तो दूसरे वाले का भी क्या होगा, 20 किलो न्यूटन, राइट. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. चलो सर वो शॉर्टकट मेथड से कैसे है? इसमें कहाँ शॉर्टकट मेथड लगेगा, यहाँ तो अगर सिर्फ एक पॉइंट लोड लग रहा है, राइट, तो उसके बेसिस पे तुम निकाल सकते हो. हाँ ठीक है. या लगाना चाहो तो लगा के देखोगे, देखो एक बार ट्राई करो, है ना. यहाँ पे तो सिंगल पॉइंट लोड था, यहाँ पे डबल पॉइंट लोड है, बट उससे ये देखो यहाँ पे इजी है, देख के तुम्हें तुरंत सॉल्व करना. यहाँ पे तुम कैलकुलेट करोगे, माइंड लगाओगे, उससे अच्छा है कि तुम 2 मिनट में एक रिएक्शन निकाल लोगे फटाक से रख के. हाँ सर. है कि नहीं. हाँ सर. ये तो वो कंडीशन होगी जब आपकी पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है. और हाँ सर. अब डिफाइन करते हैं क्या, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, राइट.
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम बोलते हैं यूडीएल। तो हाउ यू आर गोइंग टू फर्स्ट लेट अंडरस्टैंड कि आप यूडीएल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जैसे ही आपने यूडीएल का नाम दिया, अपनी चीजें डिफाइन की, तो या तो आपका यूडीएल जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट रहेगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखने की कोशिश करो तो ये एक टाइप का एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, W इज डिफाइंड एज, हमने बोला 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक। तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 5, इमेजिन, राइट। दिस इज द लेंथ ऑफ 5 मीटर, और पर मीटर लोड कितना लग रहा है, 10 किलोमीटर पर मीटर। इसका मतलब कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड है जो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये टोटल एरिया कितना रिप्रेजेंट करेगा, दिस 10 इंटू 5। तो टोटल लोड अगर आप बात करो, टोटल लोड कितना एक्ट कर रहा है ऑन द बीम, इस पूरे बीम पे 5 मीटर के डिस्टेंस पे टोटल लोड कितना एक्ट कर रहा है, 10 इंटू 5, दैट इज योर 50 kilo Newton, right? Now the important thing is that this UDL can also be represented in this particular fashion, which is easy to write, right? So it is to be written in this particular way or in this particular conditions, right? अब इसमें एक पॉइंट ऑलवेज याद रखना कि टोटल लोड का रिप्रेजेंटेशन जो है हमने यहाँ पे लिख लिया, तो टोटल लोड को ऑलरेडी डिफाइन इस तरह से करते हैं, दैट इज एरिया ऑफ लोड डायग्राम, राइट। दैट हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड, दिस इज द एरिया यू आर गोइंग टू फाइंड। क्लियर है? ठीक, दैट इज वन थिंग। नाउ सेकंड थिंग, सपोज आपने ये टोटल लोड तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये जो टोटल लोड है, ये कंप्लीट टोटल लोड अगर आप जानने की कोशिश करो कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे या किस डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, ये कैलकुलेट करना ही उतना ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आप जब तक इस टोटल लोड के पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाओगे, आप ये आगे कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे कि बेंडिंग मोमेंट कितना देगा। बिकॉज पॉइंट सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कंडीशन। तो ऑलवेज रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक। अब चाहे आपका ग्रेजुअली वेरिंग लोड हो, जिसको आप यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड भी बोलते हो, ठीक है, या आपका यूडीएल हो यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, ठीक है, कोई भी लोड डायग्राम हो, कोई भी लोड डायग्राम हो, जो आपका टोटल लोड है, टोटल लोड, ठीक है, टोटल लोड जो है वो उसके टोटल एरिया के सीजी पे एक्ट करेगा। मतलब टोटल एरिया का सीजी क्या हो जाएगा, उसका सेंट्रॉइड, जो उस पूरे एरिया का जो सेंट्रॉइड होगा वो पूरा लोड वहां पे आपका एक्ट करने लगेगा। सिंपल सा केस है। अब आप इस कंडीशंस को देखो, अब आप अगर आप यूडीएल को देखोगे तो यूडीएल इज डिफाइंड एज वन रेक्टेंगल, इसका सेंटर कहाँ, हाफ ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। तो इसका सेंटर हाफ ऑफ दिस वैल्यू का मतलब है कि ये 2.5 मीटर पे है, तो हम ये पूरा लोड जो है, ये जो पूरा लोड है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 50 है, उसके सेंटर पे यहाँ पे एक्ट कर रहा है। यानी कि आप इस पूरे यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर सकते हो with a magnitude of 50 kilonewton and which is acting at 2.5 meter from the free end. Class, is that clear to everyone? Class, is that clear to everyone? When if you have a load condition which is defined in terms of UBL, UBL or GBL, so their load, total load is acting on its area of CG.
किसी पर्टिकुलर सीजी पॉइंट पे एक्ट कर रही है। क्लियर है? बट दिस इज नॉट कंप्लीटली एप्लीकेबल कि शेयर फोर्स का भी वो पूरा डायग्राम वहीं पे एक्ट कर जाए या बेंडिंग मोमेंट आकर, नहीं। इट इज सिंपल वे कि ये पूरा पूरा रिप्रेजेंटेशन है आपका कि पूरे लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना। तो पूरा पॉइंट लोड का वैल्यू कितना होगा और वो किस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, दैट इज क्लास क्लास। I want everyone to participate this and solve you. Please find the reaction. This is of 10 kilonewton per meter. Now find the value of RA and RB. Please solve this question. So let's see these conditions. The first thing we are going to define कि okay, इसको हमने चेंज कर दिया किसमें, पॉइंट। तो ये RA है, ये RB है, ठीक है। अब देखो ये UDL एक्ट कर रहा है, तो हमने क्या बोला कि पहले आपको ये निकालना है कि टोटल लोड कितना है। तो टोटल लोड होगा कितना, 10 into 220, राइट, which is acting at the center of this। 2 मीटर के सेंटर पे होगा, तो 2 मीटर का सेंटर क्या होगा, 1 मीटर। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 20 किलो न्यूटन। So this is 1, this is 1 and this is 3, right? That's very simple। तो आपको रिएक्शंस ले लो, तो रिएक्शंस का हो जाएगा आर ए की वैल्यूज को डिफाइन करोगे तो हो जाएगा 20 into 4 by 5, यही होगा, which is defined as 16। Similarly, reactions at B is 20 into 1 by 5। देखो अब आदित्य, you can see that कि अब इस केस में ये वैल्यूज कितनी है, ये 4 हो गई, राइट, ये हो गई 1। तो आरबी का रिएक्शन क्या हो जाएगा, 20 इंटू 1 बाय 5 होगा ना, क्योंकि ये इसके एंड पे लेना है। आर ए का क्या होगा, 20 इंटू 4 बाय 5 है। तो यहाँ पे तुम सिंपली एक लाइन में तुम चीजें इक्वेट कर सकते हाँ हो। क्लियर है? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लोडिंग कंडीशन को अगर हम डिफाइन करें, we can find in this particular conditions। So this is your reaction A, this one is your reaction B, this is this is defined as 10 kilonewton per meter, right? The length is of 6 meter। अब देखो ये है, ये आपको लोड मिल गया है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इन दिस क्वेश्चन इज you need to first calculate its total area, right? So always remember your total area represent your total force, जिसको आप total load बोलते हैं। and the value of this total load कितना हो जाएगा, half of length into height। length is 6, height is 10। total कितना हो गया, that is your 30 किलो न्यूटन। Now one thing you have calculated कि भाई ये 30 किलो न्यूटन का लोड तो आपको मिल गया, ठीक है। अब इसका सेंटर क्या होगा, सही बात है, आपको टोटल तो लोड मिल गया, लेकिन ये टोटल लोड को जो अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो इसके सीजी पे कन्वर्ट करोगे ना, तो इसका सीजी क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? 2/3 of length from RA. Yes। So all in this condition always remember this is your A, this is your B। So from this point to this, it is जो CG है
को 2/3 इंटू एल रिप्रेजेंट करेगी। तो इसका मतलब ये जो टोटल लोड ऑफ पॉइंट है जो है 30 किलो न्यूटन का, वो 2L/3 और फ्रॉम आर ए होगी, या आरबी से वो L/3 H/3. L/3. एच नहीं L/3, राइट। नाउ आदित्य यू कैन सी दैट नाउ अब आर ए अगर आपको कैलकुलेट करना है तो होगा 30 इंटू, अब इसके रिस्पेक्ट में ये L/3 होगा ना, अपॉन L, ये कैंसिल, इसका मतलब यहाँ पे आ गया 10। अब आरबी क्या हो जाएगा, आरबी के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट होगा ना, तो 30 इंटू 2L/3 इंटू टोटल लेंथ है L, ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 10, ये हो गया आपका 20। तो रिएक्शन एट ए इज 10, रिएक्शन एट बी इज 20 किलो न्यूटन। Class, is that clear to everyone? Yes, sir. Let's understand कि अगर आपके क्वेश्चन में एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है, राइट, और एक पॉइंट पे आपको एक मोमेंट दिया है, तो लेंथ इज ऑफ 5 मीटर एंड दिस पॉइंट पे जो मोमेंट दिया है which is defined as 20 किलो न्यूटन मीटर। Tell me reaction at A and reaction at B. Please RB4, right? अब देखो, how am I going to solve this question? We all know that we have two criteria. First, summation of forces should be 0 either in x or y direction, and second is summation of movement should be 0, right? So let's first understand. If I say summation of forces equals to 0, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रही होंगी तो वो होंगी क्या, आर ए प्लस आर बी, बट एक्सटर्नली बाहर से कोई फोर्स इसमें एक्ट कर रहा है, जिसका मतलब रिएक्शंस ऑफ आर ए प्लस आर बी की वैल्यू क्या है, 0। अब समेशन ऑफ मोमेंट के केस की बात करो, तो चलो भाई मोमेंट एट ए पॉइंट को देखते हैं। तो हमने बोला समेशन ऑफ मोमेंट एट ए शुड बी 0। तो अब इसके रिस्पेक्ट में अब देखो ये कौन सा मोमेंट है, ये आपका बी पॉइंट पे क्लॉकवाइज दे रहा है क्या, नहीं, एंटी क्लॉक। तो रिएक्शन क्या बनेगा, आर बी इंटू एल माइनस एम होगा ना यहाँ पे, जो कि मोमेंट है, और वो मोमेंट है कितना, क्लॉकवाइज है, इज इक्वल्स टू 0। तो इट मीन्स व्हाट, आर बी का जो रिएक्शन है वो m बाई एल है क्या। अब m की वैल्यू 20 है, l की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा 4 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे आर ए इज नथिंग बट माइनस ऑफ आर बी। इफ यू नो द वैल्यूज ऑफ आर बी यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ आर ए, दैट इज माइनस m by l. So here in this case reaction is of -4. Here in this case reaction is of 4 kilo Newton. 4. So class always remember one thing कि simply supported beam का कोई भी लोकेशन में बेंडिंग मोमेंट है उससे कोई मतलब नहीं है, रिएक्शन हमेशा m/l ही होगा। मतलब इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है कि किसी भी लोकेशंस पे लगे। ये बात समझ में आ रही है, राइट? सो नोट करके अगर हम लिखना चाहें, हियर द नोट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज reaction at A and B should be m/l and minus m/l irrespective of
Location of movement in simply supported B. Right, class? Is that clear to everyone? So this is all. Mostly we have discussed all types of reactions at these conditions, right?